This nominal value is actually nothing but starting or offering price. The investment is number of shares denoted by letter N. Number of shares is denoted by letter N. Dividend is always calculated with nominal value. Keep in mind, dividend return market value, dividend nominal value 2025 बोर्ड्स में आया था, ठीक है. एंड दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जिसने बच्चा लोग को बहुत परेशान किया. तो ये क्वेश्चन करेंगे कैसे? सो इज इट अबव पार, एट पार, बिलो पार और अबव पार, और फॉर्मेट लिखा है. सो क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट दिस 10 मींस, व्हाट दिस 20 मींस एंड व्हाट डज दिस 30 मींस? yield percent या return percent, they are same. Okay, so they are asking nothing. बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एक ही क्वेश्चन 2018 में. That means you have to keep in mind, so this kind of questions are important actually. This is important, this kind of questions are important. Hello and very warm evening to all. I welcome you to the calculation quest with our third class of our maths crash course. Today we are going to do the chapter shares and dividend. Okay, so without further delay, let's dive into the chapter. Now, what is share actually? What is share? See, let's say एक कंपनी है टाटा, ठीक है. उसने अपने कुछ पार्ट को पब्लिक को दिया. टाटा हैज गिवन टू पब्लिक, ठीक है. पब्लिक को दिया, क्या दिया? कुछ पार्ट. टाटा हैज गिवन सम पार्ट ऑफ हिज कंपनी टू पब्लिक. इन रिटर्न ऑब्वियसली कंपनी विल टेक सम अमाउंट. yes or no? So let's say A has bought some part, और वही पार्ट, that part is only known as what? That part is only known as shares. That part is only known as share. Okay, वही पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर्स बोलते हैं. अंडरस्टूड? ओके. नाउ लेट्स से A और B ने कुछ शेयर खरीदा. किससे? टाटा से कुछ शेयर खरीदा. ऑल राइट. देन दिस A and B is also the what? Part of the company. मतलब वो भी क्या है भाई? वो भी एक ऑनर बन गया. B is also the A and B both are now owner. So जिसके पास शेयर होता है वो कंपनी का ऑनर कहा जाता है. तो so A and B is also the owner of the company Tata. This is as an example. Okay, now next. तो यहाँ कंपनी तक तो बात हो गया, ऑनर तक तो बात हो गया. नाउ ये बात था क्या चीज का? शेयर का. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? दैट इज डिविडेंड. अब ये डिविडेंड है क्या चीज? व्हाट इज डिविडेंड? नाउ सी, वी हैव बॉट सम शेयर्स फ्रॉम टाटा. वी हैव some shares of Tata. Yes, and this company, that means we have some share. That means what? We are the owner also. We are the owner. और owner को क्या चाहिए? Profit तो चाहिए ना. So Tata is making some profit. Making some profit. Now this profit will be given to whom? The owners, to actually shareholders. Okay, listen carefully. The profit made by the company will be given to whom? Shareholder. जो प्रॉफिट बना रहा है कंपनी, वो शेयर होल्डर को कुछ देगा, और वही प्रॉफिट को ही क्या बोला जाता है भाई? वही प्रॉफिट को ही हम लोग बोलते हैं डिविडेंड. वही प्रॉफिट को ही हम लोग बोलते हैं डिविडेंड. ओके, ऑल राइट. ओके,
सो आई होप यू आर क्लियर नाउ डिविडेंड का मतलब क्या है. तो डिविडेंड और एक बार बता देता हूं, कंपनी कुछ प्रॉफिट बना रहा है तो उसका हिस्सा कुछ किसको दिया जाता है भाई, शेयर होल्डर को दिया जाता है. तो वही प्रॉफिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं. क्लियर? ओके. नाउ सम टर्म्स रिलेटेड टू शेयर्स इन द चैप्टर. सम टर्म्स. फर्स्ट से nominal value. So what is actually nominal value? See, कंपनी ने जब शेयर्स निकाला किसको दिया, पब्लिक को दिया ना. किसको दिया, पब्लिक को दिया. So starting price, so this nominal value is actually nothing but starting or offering price. दिस इज आवर स्टार्टिंग और ऑफरिंग प्राइस. वही होता है नॉमिनल वैल्यू. जब कंपनी सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम जब अपना शेयर्स को पब्लिक को दे रहा है. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज, इन टिपिकल टर्म इट इज एक्चुअली नोन एज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. पब्लिक को दिया जाता है. सो उसी को बोलते हैं हम लोग नॉमिनल वैल्यू. अदर नेम फेस value, other name for nominal value. Clear? Next one, that is market value. Now अब क्या हुआ, सबसे पहले share was offered to public. Now public will start to trade. Public will start to ट्रेड. यस, सो ट्रेड कर रहा है. ट्रेड मीन्स व्हाट, बाइंग एंड सेलिंग. यस, बाय भी कर रहा है, सेल भी कर रहा है. सो दैट अमाउंट, वो जो पहले का अमाउंट था, अब क्या बन गया आफ्टर ट्रेडिंग, इट हैज बिकम नथिंग बट द मार्केट वैल्यू. ओके, it has become the market value. And keep in mind, we buy and sell. Note it, we buy and sell. Buying and selling in what? Market value. We do everything in what? Market value. All right, okay. Now there is another word, return. Return भी आता है. There is one word, return. What is return now? It is nothing but other word, profit. ठीक है, profit. Let's say I have invested ₹10. अब ये बढ़ के बन गया 12 rupees. So I have earned how much? ₹2. So this is what our profit or return. Clear? Other name for return, other name for return या profit. We take this as dividend also. What is dividend? Dividend is the profit. It is the profit given by whom? Dividend is the profit given by whom? The company itself. Company जो profit देता है किसको? शेयर होल्डर को. वो भी तो profit है ना, profit ही है ना. Yes. So return, profit, other name is nothing but a dividend. Clear? Okay. Now formula. Typically I can say 3 formulas. We have 3 formulas. Clear? Okay. So first formula, sum invested. Sum क्या भी बोला जाता है? Obviously investment. We also say this as investment. So investment क्या है? Investment is nothing but, so keep in mind, investment is number of shares denoted by letter N. Number of share is denoted by letter N into market value. Investment मतलब क्या होता है भाई? बाय करना, कुछ शेयर को बाय करना. And just now I have told you, we buy and sell in market value. That means investment भी क्या होगा? Number of share into market value. Okay. So क्या होगा? Sometimes
इन्वेस्टमेंट दिया होगा, यू विल बी गिव मार्केट वैल्यू, यू आर आस्क्ड टू फाइंड नंबर ऑफ शेयर। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, ऑल राइट, बेसिक सा क्वेश्चन। ओके, सो next formula, coming to the next formula, that is dividend, and this is I think one of the most important formula among all this thing. Dividend बहुत बार यूज होने वाला है, dividend. Okay, so dividend equals to number of shares into dividend percent into nominal value whole divided by 100. nominal value it is, so यहाँ पर बच्चा लोग कंफ्यूज मत हो जाना, note, I'm writing a note here, note, what note? Dividend is always calculated with nominal value. Keep in mind, डिविडेंड हमेशा नॉमिनल वैल्यू में ही कैलकुलेट किया जाता है। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 3, रिटर्न परसेंट। ओके, सॉरी, इससे कुछ पहले बता दो। सो सेम केस हियर, सेम केस, सी समटाइम्स डिविडेंड परसेंट दे देगा, डिविडेंड पूछेगा, समटाइम्स डिविडेंड and number of shares will be given, dividend percent पूछेगा, and so on. Something, one of anyone will be missing and you will be simply asked to find that thing. बस क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, रिटर्न परसेंट। सो अभी रिटर्न का बात हुआ था। रिटर्न मतलब है क्या चीज? रिटर्न मतलब होता है प्रॉफिट, रिटर्न मतलब होता है प्रॉफिट। सो प्रॉफिट, ओके, प्रॉफिट मतलब डिविडेंड भी ले सकते हैं। कीप इन माइंड, कभी पूछ लेगा कि रिटर्न परसेंटेज निकालो, सो डिविडेंड विल बी गिवन। सो फॉर्मूला प्रॉफिट के जगह क्या लगाएंगे हम लोग? डिविडेंड। ऑल राइट, होल डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100%। नाउ व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? थोड़ा सा यहां पर एक बात समझो, इन्वेस्टमेंट क्या था? इन्वेस्टमेंट था नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट था नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड हियर, कंक्लूजन क्या बनता है कि रिटर्न इज कैलकुलेटेड विथ मार्केट वैल्यू। रिटर्न मार्केट वैल्यू, डिविडेंड नॉमिनल वैल्यू, रिटर्न मार्केट वैल्यू, डिविडेंड नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, सो दिस वर द फॉर्मूलाज। ऑल राइट, सो एक हाथ ऐसा फॉर्मूला भी आता है कि टोटल डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना। ठीक है, ओके, सो आई थिंक उतना इंपॉर्टेंट है नहीं वो फॉर्मूला। ठीक है, सो वी विल डू सम क्वेश्चंस नाउ। ऑल राइट, ओके, नाउ few more terms, three more terms, you can say 3 terms या 3 important टॉपिक ही बोल लेते हैं इसको। सो देखो, समटाइम्स नंबर 1, केस 1, ओके, केस 1, market value is equal to nominal value. So whenever market value is equal to nominal value, we call this as at par. You are going to get this word par word, समझ लेना। एट पार मतलब क्या होता है? मतलब मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू दोनों बराबर। ओके, नाउ नंबर 2, व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन नॉमिनल वैल्यू, we say this as below par, or else डिस्काउंट भी बोलते हैं हम लोग, डिस्काउंट भी बोलते हैं। नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम है, बिलो पार, डिस्काउंट। द लास्ट वन, मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन नॉमिनल वैल्यू, वी से दिस एज above par or premium. All right, premium, clear?
So without further delay, let's start question number 1. So question 1 states that sum invested to purchase 15 shares. So this is number of shares of a company. Nominal value is 75. Discount दिया है 20%. So what we are asked to find sum invested. So what are they asking? Investment. What they are asking? Investment. What is the formula of investment? Number of shares into market value. So do we have market value? No. What is given? Nominal value. Let's find the market value. No? So if you will see 20% discount है क्या में भाई? Nominal value में. So पहले 20% निकालो. So market value equals to 75 into 80%. 80%. If you remember if you have gone through my first lecture, why 80%? I've already mentioned discount 20%. That means we have to pay for an 80% value. Yes, 80% value का हम लोग क्या करें? Pay कर रहे हैं. Alright. So percentage means by 100. Okay. So 25, 3 times 25, 4 times 4, 20 times, that is 60 rupees. So what is this 60? So this is our market value. Answer अब टिक मत कर देना 60. Answer 60 नहीं है. What is asked? Investment. So investment equals to number of shares. 15 shares are bought. Yes, 15 shares are bought. And what is the market value? 60. What is the market value? 60. So what will be the answer? So 15 into 60 is simple as 900 rupees. So investment is 900 rupees. Option number D. Clear? Next. A man invested in a company paying 12% dividend. If the return is 10%. So what is given? क्या क्या दिया हुआ है question? So basically ये okay. This is 2025 latest question. 2025 बोर्ड्स में आया था, ठीक है. एंड दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जिसने बच्चा लोग को बहुत परेशान किया. तो ये क्वेश्चन करेंगे कैसे? सो इज इट अबव पार, एट पार, बिलो पार और अबव पार और कैन नॉट बी डिटरमाइंड. सो ये क्वेश्चन को करेंगे कैसे? व्हाट वी डू, सो लेट नॉमिनल वैल्यू बी 100 रुपीज. नाउ डिविडेंड इज 12%. सो यहां पर कोई भी नंबर ऑफ शेयर्स मेंशन नहीं किया है. ऑल राइट, mention नहीं किया है. So whenever the number of shares are not mentioned, we will take the number of share as 1. n को हम लोग 1 मानते हैं. So dividend equals to, we know that number of shares into dividend percent into nominal value whole divided by 100. Yes. So पता है कि dividend is always calculated in nominal value. So number of shares 1, dividend percent as 12 by 100 and nominal value is taken as 100. So here dividend is rupees, you can say 12. ठीक है. Now in the next case percentage return दिया हुआ है and we know return formula is nothing but return upon investment into 100%. Clear? Okay. Now रिटर्न मतलब क्या था? हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था कि रिटर्न का मतलब ही होता है प्रॉफिट, उसका ही मतलब होता है डिविडेंड. यस. सो रिटर्न परसेंट इज गिवन एज 10 हियर. रिटर्न इज गिवन एज 12. इन्वेस्टमेंट क्या में किया जाता है? मार्केट वैल्यू पता है? नहीं है. लेट द मार्केट वैल्यू बी एक्स. नंबर ऑफ शेयर्स, इट इज नथिंग बट 1 into 100. Let us cancel it out. So from here we get x equals to 120 rupees. Rupees 120. What is this x? This x is nothing but market value. So if you see nominal value is 100 rupees and market value is 120 rupees, तो मतलब क्या है? शेयर का दाम बढ़ गया ना. सी, शेयर का दाम क्या हुआ? बढ़ गया ना, +20 हुआ. सो इफ द शेयर प्राइस इंक्रीजेस वी से इट इज अबव पार. क्लियर विद दैट? नेक्स्ट क्वेश्चन. द सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू बाय 50 शेयर्स. ओके, इससे पहले I would like to
tell you one thing. Okay, just key. Okay, let me insert a slide here. See, our question is given. जैसे कि ये question देख लो. In this question, what kind of format? Let us understand the format. To buy 50 rupees 40 share at 38.50 rupees. So let us understand the format. So 10 to buy 10 rupees 20 shares at rupees 30. So this is the structure. ये एक structure है question का. Okay, this is the format लिखा है. So क्या है? What is this? What this 10 means? What this 20 means? And what does this 30 means? So here, keeping in mind, this जो आगे का होता है, it denotes number of shares. Rupees 20 shares denotes nominal value. And जो at के बाद आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं market value. Clear? Okay. Now let's go to the question. See, rupees 50 to buy 50. So what is this? This is number of shares. 40 shares. This is nominal value at 38.50 rupees. So this is market value. तो शेयर ऑब्वियसली क्या हुआ है भाई, 40 से 38.5 हुआ है. दैट मीन्स द शेयर इज एट इन डिस्काउंट. सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन. सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड. व्हाट इज आस्क्ड? सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड. सो सम ऑफ मनी मीन्स नथिंग बट इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है और कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट. एंड इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू. सो व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर? 50. व्हाट इज द मार्केट वैल्यू हियर? 38.50. So when you multiply 38.50 into 50, so you get basically 1925. So the answer is option C. Clear? Okay. Next, Salman invest. Okay. Now, अभी तक हम लोगों ने क्या किया? MCQs किया. There were 3 MCQs. Now we'll start to solve the numericals. Okay. So first question. Salman invest a sum of money in rupees 50 share, nominal value, paying 15% dividend. This is dividend percentage, quoted at 20% premium. Premium मतलब शेयर का दाम बढ़ गया. So market value is directly not given. So if his annual dividend is 600, क्या दिया हुआ भाई? Annual dividend, number of shares पूछा है. So dividend, सबका बाप एक. Yes or no? सबका मालिक एक, सबका बाप एक. Yes. So number of shares बोला है. What is number of shares? So number of shares, that means जो dividend का फॉर्मूला है ना, dividend equals to number of shares into nominal value into what? Into our dividend percent. Yes. So n कितना है भाई? Number of shares कितना है भाई? N. We have to find that. Do we have the dividend? Yes, that is 600. N निकालना है. Nominal value is 50 and dividend percent is 15%. Okay, that is divided by 100. Yes, so 51 times and 52 times. 15, 40 times and 2 when it goes there, n equals to 80 shares. So number of shares equals to 80. His total investment. Now we know investment. So we know investment equals to number of share into market value. So do we know the market value? No. Let us find the market value first. So market value निकालना है. Yes, market value निकालना है. So market value में if you will say यहाँ पर प्रीमियम कितना है भाई? 20%. कितना बड़ा है? 20% बड़ा है. Yes. So 20% of what? So पहले प्रीमियम निकाल लो. Premium equals to 20% मतलब divided by 100 into
द नॉमिनल वैल्यू, सो 52 टाइम्स एंड प्रीमियम, मतलब शेयर का दाम 10 रुपए से बढ़ गया। ओके, सो मार्केट वैल्यू कितना होगा? मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम, दैट इज रुपीज 50 plus 10, that is equals to rupees 60. So rupees 60 is our market value. So total investment निकाल लो आप. So investment equals to number of shares. We have 80 shares into market value, which equals to rupees 4800. So 4800. So rate of return on his investment, rate of return पूछा है, तो rate of return तो निकालना आता है, रिटर्न का फॉर्मूला लगा के। so इससे पहले इसको कुछ छोटा कर लेते हैं, ओके। सो क्या पूछा है हम लोग को? रिटर्न परसेंट। सो रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न मीन्स रिटर्न परसेंट। नंबर 3, रिटर्न परसेंट इक्वल्स टू रिटर्न मतलब क्या होता है? रिटर्न अपन इन्वेस्टमेंट इनटू 100%। यस, 100% ये तो होता है। यस, सो रिटर्न मतलब होता क्या है? रिटर्न मतलब इज नथिंग बट इट्स आवर डिविडेंड। सो डिविडेंड इज 600। व्हाट इज आवर इन्वेस्टमेंट? 4800 into 100. So 20 got cancelled. 600 times and 8 times. So 100 divided by 8, which equals to 12.5% is our investment. Clear? Okay. Next question. Question number 5. So number 5 states that Rohit investment दिया हुआ है ₹100 शेयर, नॉमिनल वैल्यू एट 20 ₹20 प्रीमियम, मतलब मार्केट वैल्यू कितना होगा? 120, पेइंग 8% डिविडेंड। ओके, डिविडेंड इज गिवन। रोहित सोल्ड द शेयर when the price rose to 168 and he invested the proceed. सेल प्रोसीड के बारे में, दिस इज सेल प्रोसीड क्वेश्चन। सेल प्रोसीड क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन। सो ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर, सो नंबर ऑफ शेयर, डिविडेंड है, यस, डिविडेंड परसेंट दिया हुआ है, यस, ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर पूछा है, इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है। सो इन्वेस्टमेंट दिया ना, एंड वी नो इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितना है? 9600। नंबर ऑफ शेयर निकालना है, मार्केट वैल्यू 100 रुपीज नॉमिनल वैल्यू, 20 रुपीज प्रीमियम। सो मार्केट वैल्यू कितना होगा? मार्केट वैल्यू will be equals to nominal value plus premium. Nominal value is 100 plus 20, which equals to 120. So this is our market value. So market value, so n equals to 9600 divided by 12. So 12 how many? 8 times. So number of share is nothing but 80. number of share कितना है भाई? 80 है। all right, okay. Now सेल प्रोसीड, व्हाट इज सेल प्रोसीड? आगे बढ़ चुके हैं। सेल प्रोसीड क्या है भाई? जो जितना शेयर है उसको हम लोग बेच रहे हैं, जो आने वाला इन्वेस्टमेंट को ही उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शेयर। सेल प्रोसीड। सो देयर द प्राइस रोज टू 160, तो वो बंदा ने, मिस्टर रोहित ने कितना में उसको बेच दिया? 160 रुपया में बेच दिया एक शेयर का दाम। How many share he has sold? 80. So number 2, sell proceed equals to number of share into market value. This is obviously market value है ना, दूसरा market value। ये तो पहला केस का, और ये दूसरा market value। Number of share 80. What is the market value? 160. So multiply 86 is 48. 81 times is 81200. So sale proceed is 12,800 rupees. न्यू नंबर ऑफ शेयर। अब उसने क्या किया कि रोहित ने जो सेल प्रोसीड था
इंक्लूडिंग डिविडेंड। डिविडेंड कितना था भाई इसका? सो हम लोग ने अभी तक डिविडेंड नहीं निकाला है। ओके, सो वी विल फाइंड द डिविडेंड ऑल्सो, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, सॉरी, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इन 10% ₹50 शेयर एट 40। मतलब जो ये 12,800 रुपया है ना, उसको मिस्टर रोहित ने फिर इन्वेस्ट किया एक दूसरा कंपनी में, और वो कंपनी का शेयर का दाम कितना है? 40 रुपया। अब यहां पर पूछा है न्यू नंबर ऑफ शेयर। वी नो इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू n इंटू मार्केट वैल्यू अगेन। यस, ये दूसरा कंपनी का इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सो 12,800 इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर कितना था नहीं पता, वही तो निकालना है। मार्केट वैल्यू कितना रुपया में, कितना रुपया वाला शेयर? 40 रुपया वाला शेयर। 004,320। So here new number of share, new number of share equals to कितना? ₹320. Now change into dividend. What is change into dividend? Now see, पहला कंपनी दे रहा था 8%, दूसरा कंपनी दे रहा है 10%. Let's find the change in dividend now. Okay, let's find the change in dividend. उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? पहला कंपनी का डिविडेंड निकालेंगे। पहला कंपनी का डिविडेंड निकालेंगे। पहला कंपनी का डिविडेंड निकालेंगे। ओके, पहला कंपनी का डिविडेंड। Okay, so first company was paying 8% dividend. Yes, first company was paying 8% dividend. Okay, so first dividend. So dividend equals to number of share. पहला कंपनी में कितना शेयर था? 80 शेयर। Number of shares into dividend percent into nominal value. What was the nominal value? 100 divided by D1, let's say 100. So it is 640. 8 into 8, that is 640. दूसरा कंपनी dividend 2, number of share 320. दूसरा कंपनी का, न्यू कंपनी 320 shares. What was the dividend given by the company? 10%. What was the nominal value? 50 रुपया। See, ₹50 शेयर, ₹50 शेयर, 50 रुपया शेयर को कितना में मिला उसको? 40 में। That means 50, nominal value is 50 by 100 got cancelled. Okay, so 5 2 times is 10, 320 into 5, that is 320 into 5 is ₹1600. Therefore difference in dividend D2 minus D1, that is 1600 minus 640. 1600 minus 640 is nothing but 960. So this is the change into dividend. Clear? Change into dividend. All right. Okay. So I hope you guys are understanding this. ये सेल प्रोसीड का क्वेश्चन था। एक बार अगर समझ में नहीं आया, एक बार और ध्यान से देख लो। And if you are not able to understand, ask me the question. Okay, and obviously you can, I'll solve that if you have any of the doubt, any doubt. Okay, so let's move to the next question. Okay, so question number 6, number of share, market value of each share. देखो, अगर तुम लोग कर रहे हो, समझ में आ रहा है, तो एक बार खुद से ट्राई करो। ओके, ऑलराइट, नहीं आ रहा है, प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग इट। अशोक इन्वेस्टेड to 26,400. This is the investment value. 26,400. 26,400 is your investment value. 26,400 is your investment value on 12%. So this is dividend now. ₹25 share of a company. So this is your nominal value.
if he receives a dividend of rupees 2475, so dividend is also given, number of share. See, investment is given, nominal value is given, dividend percent is given, dividend is also given. You are asked to find number of shares. So we know that dividend equals to number of shares into dividend percent into nominal value. So dividend is 2475, number of shares you are asked to find, and here dividend percent is 12 and nominal value is 25 whole divided by 100. Simple calculation, 25 1 times, 25 4 times, 4 3 times, and when you cancel this, 3 8 times, 3 2 times and 5 times. Here n equals to 825. Number of share, market value of each share. अब एक शेयर का मार्केट वैल्यू पूछा है. सी इन्वेस्टमेंट इज गिवन ना, वी नो investment equals to number of share into market value. So investment is, so from here n equals to investment upon market value. Sorry, हम लोग क्या निकाले, मार्केट वैल्यू निकाले ना, मार्केट वैल्यू. So from here market value equals to investment upon number of share. इन्वेस्टमेंट कितना था 26400 होल डिवाइडेड बाय n कितना है भाई हम लोग का 825. डू द सिंपल कैलकुलेशन. सो इट विल बी 5 times and 5 2 times and 5 8 times, 0 times, 5 1 times, 5 6 times and 5 5 times. Again 5 1 times, 5 5 times, 25 5 6 times, 5 3 times, 5 3 times. So from 11 कितना से जाएगा ये 9 times and 9 times, 11 3 times, 3 से जाएगा 11 times, 3 1 times and 3 1 times 11. ओके, सो मार्केट वैल्यू, कुछ दिक्कत हुआ क्या यहाँ पर? मार्केट वैल्यू, did I make any calculation mistake here? Calculation mistake. Okay, let's do the calculation again. Here यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ जैसा लगा. Okay, investment is 26400 and number of shares bought is 825. Yes, 26400 and number of shares bought is 825, right? Okay, so calculate करते हैं. 5 times, 5 2 times, 5 8 times and 0 times. ठीक है, 5 से कैंसिल हुआ. 5 1 times, 5 6 times is 30 and 5 5 times. Okay, 5 से कैंसिल करते हैं. 5 1 times, so 0 times, 5 times and 6 times. ठीक है. 5 3 times and 5 3 times. ठीक है. Okay, 3 11 times, 3 3 times, 3 5 times and 3 2 times and 11 3 32. Okay, market value is 32. समटाइम्स थोड़ा सिली मिस्टेक हो जाता है, यू हैव टू बी केयरफुल, पता चल जाना चाहिए. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मच अ मैन इन्वेस्ट, क्या पूछ रहा है? इन्वेस्टमेंट. व्हाट इज आस्क? इन्वेस्टमेंट. ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है. इन 50 शेयर्स नॉमिनल वैल्यू एट ₹60 मार्केट वैल्यू and an income of 450. Income, return, you can treat this as dividend also if rate of dividend declare is 10%. क्या दिया हुआ है यहाँ पर? डिविडेंड दिया हुआ है, डिविडेंड परसेंट दिया हुआ है. ओके, सो करते हैं. आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर. क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा. चलो करते हैं. इन्वेस्टमेंट, you have to find the investment and you know investment मतलब क्या होता है? Investment मतलब होता है number of share into market value. Do I have market value? Yes, I do. Do you have number of shares? No. So number of shares? No. पहले number of shares निकालते हैं. ठीक है. Okay. So dividend दिया हुआ है, dividend percent दिया हुआ है. So we know dividend equals to number of shares into nominal value into dividend percent. Okay. Dividend is 450, number of shares निकालना है, nominal value is 50 and dividend percent is 10.
52 times 5 times 590 times. So n का वैल्यू कितना है? So number of shares bought is 90. इन्वेस्टमेंट निकालो. इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू investment equals to number of shares 90 into what is market value. Market value is 60, that is 96 times is 5400. So this is our investment. So there is one more second part, excuse me. Also find his yield percent. क्या पूछा है? Yield percent. So this yield percent या return percent, they are same. Okay, so they are asking nothing but return percent. क्या पूछा है? Return percent. So return percent equals to return कितना है भाई? Dividend. So we know dividend upon or income. Let's say write income here. Income upon investment into 100%. So income कितना है भाई? 450. What is the investment? 5400 into 100. So 20 got cancelled. So ये जाएगा तुम्हारा 9 से 9 5 times 50 times. So 9 6 times. 2 25 times and 2 3 times. So this is 25 upon 3. 25 upon 3%, which equals 3 6 times is 24 and 3%. So question में पूछा है to the nearest whole number, so which is equal to 6%. So nearest whole number पूछा है ना, so यहाँ पर yield percent क्या होगा? 6%. Clear? Okay. Next question. A number of share purchase पूछा है. Yes, a man investment is given. Rupees 50 shares available at 10% discount. If the dividend paid by the company is 12%, calculate the number of shares purchased. See, same question. बार बार एक ही question repeat हो रहा है. एक ही question 2018 में. That means you have to keep in mind. So this kind of questions are important actually. This is important. This kind of questions are important. All right. Okay. चलो करते हैं. So number of shares purchased. So if you will see here, यहाँ पर डिस्काउंट दिया हुआ है and share is nominal value 50, discount इतना है. So if you need to find market value, if you guys remember कि डिस्काउंट दिया है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है? 10% डिस्काउंट है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है? 90%. So मार्केट वैल्यू होता है 50 into 90%. परसेंट मतलब 100, 45. So market value is nothing but 45. Number of share पूछा है. So number of share equals to, we know, investment upon market value. So investment is 22500 and market value is 45. So 9 5 times, 9 2 times is 18, 5 times 0 times 5 times. So number of share is nothing but 500. Annual dividend received. Dividend पूछा है. So dividend, so this is question number 1. Number 2, so dividend received कितना होगा? So dividend received is number of shares. I'm not writing the formula again. Dividend बार बार आ चुका है. Dividend percent 12% into nominal value. What is the nominal value of the company? 50 rupees by 100. Clear? 0 cancel. 5 times is 25 and 25 into 12 is 25. 12 is 300. 5 times is 25. 25 into 12 is 300. So dividend is rupees 3000. So company paid a dividend of 3000 to that person. All right. Annual dividend. Now next, the rate of return he gets on his investment. क्या पूछा है? अब इन्वेस्टमेंट में क्या पूछा? रिटर्न पूछा है. रिटर्न परसेंट. सो वी नो रिटर्न परसेंट इक्वल्स टू रिटर्न योर इनकम या प्रॉफिट या डिविडेंड. सो डिविडेंड दैट इज 3000 अपन इन्वेस्टमेंट. व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट? 22500 into 100%. Yes, 100 and 0 got cancelled. So 5 6 times 5
25 से काट लेते, चलो कोई नहीं, 5 4 टाइम्स एंड 5 5 टाइम्स, ओके, अगेन 5 9 टाइम्स, 5 कितना से जाएगा, 5 12 टाइम्स 120, 3 4 टाइम्स, 3 सॉरी not 4 times, 3 times and 3 40 times, so this is 40 divided by 3. Okay, so whenever you divide 40 by 3 you get answer as 113.33%, which is equal to 13%. Why only 13%? नियरेस्ट होल नंबर पूछा है, क्या पूछा है, नियरेस्ट होल नंबर। सी उस टाइम का पहला क्वेश्चन में भी वही बोल रहा था, नियरेस्ट होल नंबर। ओके, सो आई होप यू गाइज आर गेटिंग सम नॉलेज एंड कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आया, आस्क मी द डाउट, I'll solve it. See, cell proceed वाला question now. Cell proceed. What happened now? Okay. Next question. Cell proceed. Sachin invests 8,500 in his 10%. What is this 10% dividend? Rupees 100 share at 170. Nominal value, market value. He sells the share when the price of each share rises by 30 per rupees 30. मतलब 30 रुपए बढ़ गया। 170 में इन्वेस्ट किया, 30 रुपए बढ़ गया। He invests the sale proceed in 12%, rupees 100 share at 125. चलो पहला पार्ट देख लो, पहला पार्ट। सो यहाँ पर क्या पूछा, सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड इज नथिंग बट द इन्वेस्ट, मतलब सेल, शेयर को सेल करने के बाद, सेल भी क्या में किया जाता है, सेल भी क्या में किया जाता है, मार्केट वैल्यू। सेल भी हम लोग मार्केट वैल्यू में करते हैं। ओके, नाउ सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स। डू यू नो नंबर ऑफ शेयर्स? नॉट गिवन। सो पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। सो इन्वेस्टमेंट इज 8,500, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू, 170, 0 टाइम ये 50 टाइम्स, सो नंबर ऑफ शेयर्स इज 50। सो 50 तो शेयर खरीदा और कितना में बेचा, रुपीज 30 मोर, रुपीज 30 मोर। सो मार्केट वैल्यू 170 प्लस 30 which equals to rupees 200. So he sold the share at rupees 200. What is sale proceed then? So here sale proceed equals to number of share is 50 and market value is 200, that is 10,000. So it is 10,000. Sale proceed is 10,000. The number of 125 shares he buys. Now what he has done, क्या किया उसने कि ये जो 10,000 रुपया था उसने शेयर खरीदा, फिर शेयर खरीदा, कितना रुपया वाला शेयर खरीदा, 125 वाला। तो यहां पर वही बोल रहा है कि 125 वाला कितना शेयर खरीदा। सो न्यू नंबर ऑफ शेयर, सो न्यू नंबर ऑफ शेयर, सो इट इज इन्वेस्टमेंट और एल्स सेल प्रोसीड कितना है, होल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सॉरी मार्केट वैल्यू, दैट इज 125. So 25 5 times, 25 400 times, 5 8 times. So what is the new number of shares? 80. New number of shares is 80. Now change in annual income पूछ रहा है, change in annual income, annual income. Okay, now I want you guys to annual income पूछ रहा है। Okay, that means dividend के बारे में पूछ रहा है। So change in dividend, पहले का dividend D1 और दूसरा का डिविडेंड D2, इन दोनों का डिफरेंस। सो आई वांट यू गाइस टू डू दिस क्वेश्चन एंड कमेंट द आंसर। ओके, आंसर कमेंट करना। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इन्वेस्ट रुपीज 4,500 इन अ शेयर ऑफ अ कंपनी विच इज पेइंग 7.5% डिविडेंड दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया है, डिविडेंड दिया हुआ है, रुपीज 100 शेयर आर अवेलेबल एट द डिस्काउंट ऑफ 10% डिस्काउंट दिया है। यस, ओके, नाउ तो नंबर ऑफ शेयर्स आर परचेज, क्या पूछा है, नंबर एन ही तो पूछा है। सो इन्वेस्टमेंट है, व्हाट वी नीड व्हाट, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ शेयर पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू निकालो।
सो डिस्काउंट है 10%, 100 रुपया का शेयर 10% डिस्काउंट, सो कितना में देगा वो, कितना में खरीदेगा 90%, दैट इज 100 का 90%, 90% that is how much, 90 rupees. So this is your market value. So investment is 4500 for 4500 by 90, that is 50. So number of share is nothing but 50. Annual income क्या पूछा, dividend, dividend number of shares into market nominal value, sorry, into dividend परसेंट. बार बार यही क्वेश्चन मैंने बोला था ना, ये बहुत आने वाला है, ये बहुत ही ज्यादा आने वाला है, बहुत ही ज्यादा. सो नंबर ऑफ शेयर कितना है भाई, नंबर ऑफ शेयर इज 50, नॉमिनल वैल्यू है 100 ना, सी 100, डिविडेंड परसेंट इज 7.5%, गॉट कैंसल. सो 5 into 75, सो 5 into 75 कितना होगा, 5 7 5 5 35 36 37, so it is 375. So 50 into 7.5 is 375. So dividend is 375. Next question. Okay. A company with 500 share of nominal value 120 declares an annual dividend of 15%. Total amount of dividend paid by the company. क्या पूछा यहाँ पर, dividend. Annual income of Mr. Sharma who holds 80 share of the company. If the return percent of the Mr. Sharma from shares is 10%, find the market value. Market value, see. Okay. चलो करते हैं क्वेश्चन. Okay. Total amount of dividend paid by the company. क्या पूछा, simple straight dividend. 500 shares, number of share is 500. Dividend equals to number of shares into nominal value. Nominal value 120. Dividend paid is 15% by 100. Got cancelled. So 5 into 12 is 60. 60 into 15 is 90. 5 2 times is 60. 0 into 5. Right. 5 12. Yes, it is 9,000. Dividend is 9,000. Okay. Now annual income of Mr. Sharma who holds 80 share of the company. अब उसके पास है 80 शेयर, ठीक है, ये कंपनी का, तो उसका इनकम क्या है भाई, डिविडेंड कितना है. सो डिविडेंड कितना है, नंबर 1 तो ये हो गया. सो नंबर 2 डिविडेंड, नंबर 2 डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर कितना है 80 है. What is the nominal value, 120. What is the interest given? So annual income of Mr. Sharma who holds 80 share of the company, so by 100. Got cancelled. So 8 2 times is 8 into 12 is our 896. So 96 into 15, that is 1440 rupees. Okay, this is the dividend of Mr. Sharma. So now if the return of Mr. Sharma is 10%, Mr. Sharma का रिटर्न परसेंट दिया हुआ है. सो रिटर्न परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड या इनकम या रिटर्न, और मिस्टर शर्मा का डिविडेंड कितना है भाई 1440. यस, दिस इज द डिविडेंड. ओके, सो डिविडेंड dividend upon investment into 100%. See what is asked, market value. Now we know what is investment is, don't we know what is investment? So we know that investment is nothing but number of shares into market value ना. Investment is number of share into market value, और return तो वही दिया हुआ है. Now let us find what market value. Return percent is given as 10%. Dividend is given as, dividend कितना है, dividend is 1440 rupees. Number of shares कितना है, number of shares bought
is he has bought 80 shares. No, see, he has bought 80 shares, and market value, that is what you need to find, into 100. So 0 0 got cancelled, 4 3 times and 4 6 times and 4 2 times, 8 से सीधा कैंसिल कर लेते, 180 18, कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे. ओके, सो इट इज डिविडेंड इज 1440, number of share is 80 into market value, you need to find it, into 100. Yes, got cancelled. So when you divide 144 by 8, 8 is 18, 8 1 times 18. Okay, 0 and 0 got cancelled. So here market value is 18 into 10, that is 180 rupees. All right, next question. Mr. Gupta invested this 33,000. दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, और ये क्वेश्चन हम लोग बार बार कर चुके हैं, बार बार कर चुके हैं. ओके, सो आई वांट यू गाइस टू डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. ओके, दिस इज एज योर होमवर्क. सो प्लीज कमेंट योर आंसर, कमेंट करना. आई विल कम टू नो दैट यू गाइज आर एक्चुअली फॉलोइंग. तुम लोग देख रहे हो, तुम लोग पढ़ रहे हो. ये 2024 का क्वेश्चन है. सो just get serious about it. Okay, so next question. A man bought 200 shares, rupees 200 shares. This is nominal value, 25% premium, so बढ़ गया है पैसा. Okay, 5% return is given. You are asked to find market value. So market value तो बहुत ही simple है ढूंढना. So we know कि market value means nominal value plus premium. So premium कितना है यहाँ पर? 25%. 25% of what? 25% of 200. Yes, that is rupees 50. So 50 रुपया बढ़ा है. So nominal value is 200 plus 50, which equals rupees 250. So this is our market value. आ गया. Now dividend percent received. So dividend percent निकालने के लिए we know we need what? Dividend, जो कि है नहीं. We need number of shares, जो कि है भी नहीं. And also we need, okay, dividend. कुछ तो चाहिए ना, dividend तो चाहिए, कुछ तो चाहिए, dividend तो चाहिए. So in this question, number of share is not mentioned. So if number of share is not mentioned, then what we do? We take number of share as 1. We take number of share as 1. Clear now? So dividend, so return दिया हुआ है, तो return percent से ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे. So let's see. Return percent equals to dividend upon investment into 100%. Now what is, do we have dividend? No. But dividend का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? Dividend का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? So we can write return percent is equal to dividend का जगह में number of shares. We don't know how many shares are there, so we will take share as 1, number of shares, into nominal value of the share, into our dividend percent. Okay, whole divided by 100. Okay, यहाँ पर क्या है भाई? इन्वेस्टमेंट का जगह में क्या लिखेंगे? मार्केट वैल्यू into number of shares. So how many shares are there? We are considering it as 1 into 100%. ये 100 और 100 दो कैंसिल हो गया. So return का जगह में हम लोग क्या लिखेंगे? Instead of return we write 5%, right? 5% लिखेंगे, so, जो कि कैंसिल हो जाएगा. एंड मार्केट वैल्यू का कितना है भाई? हम लोग का मार्केट वैल्यू इज 250 रुपीज. क्लियर? ओके, so when we solve it, okay, let me, चलो यहीं पर कर लेते हैं. So 0 and 0 got cancelled, 5 4 times and 5 5 times. 5 इधर चला गया. So from here चलिए
इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं. So from here dividend percent equals to 5 इधर चला गया, 25/4% which equals to 6.25%. So this is the dividend percent. Now in number C it is asked number of share purchase if annual dividend is 1000. number of share पूछा है. yes, तो अगर नंबर ऑफ शेयर पूछा है और डिविडेंड दिया हुआ है, देयर इज अ स्ट्रेट फॉर्मूला. डिविडेंड का फॉर्मूला वी नो डिविडेंड इक्वल्स टू number of shares into nominal value into dividend percent whole divided by 100. So in this case dividend is 1000. See 1000 dividend है. number of shares we have to find. nominal value share का कितना था 200 रुपये 200 and dividend percent just now we calculated that is 6.25 whole divided by 100 into 100. yes, कैलकुलेट करते हैं. got cancelled. 6.25 इधर चला जाएगा. we have n equals to 1000. so when we remove this यहाँ पर क्या आ जाएगा 100. so 100 इधर जाके मल्टीप्लाई 625 डिवाइड 25 times 25 4 times 25 4 times 25 4 times. okay 2 भी तो है ना यहाँ पर. we have also 2 here. 2 भी तो है. 2 times 2 4 times is 80. so here n equals to 80 shares. okay question number 14 and the last question of this session. specimen का question है. please do not miss this question. बिल्कुल मिस नहीं करना है. बिल्कुल भी मिस नहीं करना है. एकदम स्पेसिमेन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट. सो इन्वेस्टमेंट ₹100 से क्या है ये नॉमिनल वैल्यू पेइंग 6% डिविडेंड. दिस इज डिविडेंड परसेंट एट ₹80. व्हाट इज दिस? एट के बाद जो आता है मार्केट वैल्यू. आफ्टर अ ईयर शी सोल्ड दिस शेयर्स एट ₹75 ईच and invested the proceed. क्या चीज के बारे में बात कर रहा है? सेल प्रोसीड. डिविडेंड रिसीव्ड बाय हर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर. पहला साल पहला साल मतलब पहला शेयर के बारे में बात हो रहा है. दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट शेयर. ओके डिविडेंड पूछा है. सो डिविडेंड का फॉर्मूला. सो डिविडेंड इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स. डू यू नो नंबर ऑफ शेयर्स? नो. यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है. सो पहले क्या निकालेंगे हम लोग? नंबर ऑफ शेयर्स. So number of shares equals to investment by market value. Investment is 8,000. Market value is 80. So number of shares is 100. Dividend निकालते हो. Dividend का फॉर्मूला number of shares into nominal value कितना है? शेयर का दाम 100 and number of shares into nominal value into dividend percent that is 6%. by 100. So what is the dividend received? That is 600. Next, number of shares purchased by her using the total sale proceed. तो सेल प्रोसीड के बारे में बात कर रहा है. ओके तो सबसे पहले सेल प्रोसीड निकालते. सबसे पहले सेल प्रोसीड. सो सेल प्रोसीड इक्वल्स टू number of shares into okay number of share purchased by her by using the total sale proceed. so यहां पर कितना शेयर खरीदा था उसने? how many shares? 100. yes, सबसे पहले सेल प्रोसीड निकालेंगे ना. तो नंबर ऑफ शेयर्स यहां पर पहला का सेल 100 शेयर था. कितना में बेचा? 75 में into 75. okay so that is 100 into 75, that is 7,500. okay
मतलब बंदा ने घाटा में बेचा कुछ कुल मिला के. So she sold the share at 75 rupees each. So now what she has done, she has bought some share from this same amount. ये जो सेल प्रोसीड है ये 7500, she bought some share, और वो शेयर का दाम कितना था 27 rupees each. Now find the number of share पूछा है, find the number of shares. So new shares, new number of shares, so that is sale proceed, that is investment upon market value. कितना में खरीदा 27, yes, market value, that is 7500 कैलकुलेटेड. ये कितना से जाएगा 9 से तो कैंसिल होने वाला नहीं है. So कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ. She sold the share at 75 and invested the proceeds including the dividend. Okay. So if you will read out the question properly, including the dividend, मतलब Miss Kaur has bought some new number of share including 600 rupees. सेल प्रोसीड तो था 7500, मगर 600 रुपया भी जोड़ के उसने शेयर खरीदा. सो न्यू इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 7500 प्लस 600 which equals to 8100. That means Miss Kaur bought a new number of share by 8100. Okay, all right. And so new number of share, so new share equals to investment divided by market value, new market value. 9 times and 9 3 times, 300 times. Okay, so n equals to 300. I think some एक क्वेश्चन मिस हो गया है ये क्वेश्चन में. ओके, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ. ओके, वेट अ मिनट. सो इतना ही था क्वेश्चन. ओके, देयर वर नो फर्दर क्वेश्चन. ओके, यहाँ पर दिस थिंग्स आर गिवन जस्ट टू कंफ्यूज यू. ओके, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. वी हैव कंप्लीटेड दिस शेयर्स एंड डिविडेंड चैप्टर. वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग. खत्म हो गया. नाउ अगेन द की पॉइंट्स, की टेक अवेज. ओके, क्या करना है यहाँ पर. इफ यू विल सी, यहाँ पर एक फॉर्मूला दैट इज डिविडेंड इक्वल्स टू number of shares into nominal value into dividend percent divided by 100. बहुत ही ज्यादा यूज है. एंड इफ यू विल, एंड सेल प्रोसीड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट. एंड यू कैन क्लियरली सी कि ये 2026 स्पेसिमेन क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 2026 स्पेसिमेन में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर स्पेसिमेन में दिया हुआ है. एंड देयरफॉर इट मेक्स वेरी सेंस दैट यू हैव टू गो थ्रू दिस क्वेश्चन, सेल प्रोसीड. So go through the formulas, the question, the concept. Comment if any doubt, and also make sure to do the work, given work. All right. So with this, we have completed shares and dividend. If there is any further doubt, if any doubt, let me know in the comment section, and I'll obviously solve it as soon as possible. So with this, I'm signing off today. Thank you all. I'll see you in the next class.